Hello children, how are you all? Welcome back to GK modules after so long break. Hope you all enjoyed your holidays and hope you all are safe and sound at your home. Yes, still Corona is here, so we have to take care of ourselves, wash hands, use sanitizer, don't go out. Okay, if we are going, wear mask. Okay, whatever we were following earlier, we have to follow the same now also. Okay, I know you are very smart kids. My class kids are very good, so they can do the needful whatever we need. Okay, so here again I am here with your GK module with check out your book Whiz Kids and open your book at page number 24. Summer or winter sport. Summer or winter. See, we have sports, many sports. स्पोर्ट्स मतलब गेम्स जो होती हैं बहुत सारी हैं. चैप्टर 8 समर और विंटर स्पोर्ट. बहुत सारी गेम्स होती हैं एंड इट डिपेंड्स वेदर दोज गेम्स आर वी कैन प्ले इन विंटर और इन समर. ओके, लेट्स डू. द स्पोर्ट्स गिवन बिलो आर प्लेड ईदर ड्यूरिंग समर और विंटर season. Look at the pictures and write S for summer sports and W for winter sports in the boxes. They have given boxes and they have given the images of different sports. We have to find out whether those sports we can play in winter or in summer. Summer के लिए हम S लिखेंगे, winters के लिए W. So what are they playing? They are playing badminton. So badminton we play in summers. अभी आप लोग भी खेलते हो ना इवनिंग में छत पे, टेरेस पे और आउटसाइड. ओके, इफ यू हैव अ पर्सनल लॉन देयर you also play. Yes, so this is badminton. So write here S in this box. Okay, skiing, winter sport. सर्दी में जाते हैं ना, स्नो तो सर्दी में ही होती है, तो सर्दी में हम जाते हैं ना हिल स्टेशंस, वहाँ सी स्नोमैन और ही इज वेयरिंग गम बूट्स, कैप, मफलर्स. यस, कार्डिगन. स्नो तो गर्मी में होती नहीं, तो सर्दी में होती है ना स्नो. सो स्कीइंग वी डू इन विंटर. दिस इज अ विंटर स्पोर्ट. आइस हॉकी. अब आइस तो सर्दी में होएगी. यस, सो दिस इज आइस हॉकी. दिस इज ऑल्सो अ winter sport. So write W here, winter sport. Tennis. She is wearing summer clothes, so it means it is a summer sport. Tennis is a summer sport. Write S here. Okay, next swimming. सर्दी में करते हैं तो ठंडी लगेगी ठंडे ठंडे पानी में. So we enjoyed playing water in summer season. समर सीजन में पानी में खेलना अच्छा लगता है ना. मम्मा को भी हम बोलते हैं, मम्मा लेट मी प्ले सम मोर टाइम इन द बाथरूम. सुबह सुबह जब नहाना होता है ना, कितने मज़े आते हैं. वी इंजॉयड अ लॉट. तो स्विमिंग इज अ समर स्पोर्ट. सो राइट एस हेयर. बॉब्स्ले. सो दिस इज ऑल्सो अ विंटर स्पोर्ट. ये भी देखो बर्फ का गेम है ना, बर्फ पे खेल रहे हैं. बॉब्स्ले. स्ले मतलब on a one horse open sleigh. Yes, you heard that. So this is also a sleigh. 3-4 people are sitting and they are doing this, playing this sport. This is a winter sport. So write W here. Toboggan. This is also a sliding game on ice. So see, his cap is also flying. There is a Christmas tree covered with ice, with the snow. So this is also a winter sport. So write W here.
football. He is wearing summer dress, so this is summer sport. Football. शाम को खेलने जाते हैं ना हम बाहर, so write S here. Football. And this is luge. So this is also winter sport. ये भी ice पे game है. He is lying. So this he is sliding. So this is also winter sport. So write W here. Field hockey. See, this is here it was ice hockey and this is field hockey जो garden में हम खेलते ना. Yes. So this is the summer sports. जो field hockey होता है वो summer sport होता है. S write S here. Ice hockey हम winters में खेलते हैं, तो we will write W here. Okay. So I hope you all have understood this about summer or winter sport. Try to understand the difference between summer and winter sport. Write S for summer sport and write W for winter sport. Okay. This is all for today. Do this in your book. Bye bye.